वन आई एम अविनाश। आज हम करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ हमने क्लास 11 था उससे पहले किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर दे? y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जो इनका डोमेन और रेंज होता है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स का जो डोमेन होता है इट्स अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और जो इसका रेंज होता है इट इज फ्रॉम -1 टू +1, बट दे रिपीट दे वैल्यूज। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ओके, एंड साइन 120 की भी वैल्यू √3/2 होती है। मतलब ये जो है एक ही वैल्यू मल्टीपल एंगल्स पे देते हैं। दैट्स व्हाई these trigonometric functions are not one function। ये one फंक्शन नहीं होता क्योंकि जो इनका डोमेन और रेंज है वो यूनिक नहीं होता है। ऑलराइट, दे आर मैनी वन फंक्शन। नो, क्लास 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इफ my y is equal to sin x, then my sin x, then my x becomes sin inverse y। now किसी भी फंक्शन का इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो वन फंक्शन हो। किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो एक वन फंक्शन हो। तो हम इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू मेक देम a one function। so like for example जो इस sin x होता था इसका डोमेन होता था all real numbers, but this is not one। तो फिर to make it an inverse function I have to restrict its domain to -1 to 1। for cos inverse x to be an inverse function I also have to restrict its domain from -1 to 1। तो इन सब का एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जहां से हमको पता चलता है कि आखिर इनका डोमेन और रेंज कहां से कहां तक है, जिससे कि हम इनके वैल्यूज को निकालते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दैट। Okay, function domain range। now my first function is sin inverse x। इसका डोमेन हम लेते हैं from -1 to 1। तो जो इसका रेंज होता है इट इज फ्रॉम -π/2 to π/2। ओके, सेकेंड इज cos inverse x। ओके, इसका भी डोमेन हम लेते हैं फ्रॉम -1 to 1 एंड इसका रेंज आता है फ्रॉम 0 to π। और थर्ड इज tan inverse x। its domain is all real numbers and its range is from it's between -π/2 to π/2।
Okay. Now fourth is sec inverse x. इसका डोमेन होता है all real numbers except -1 to +1, and its range is from 0 to pi except 90 डिग्री जहां पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है. ऑलराइट. नाउ फिफ्थ इज cot inverse x. Its domain is all real numbers and its range is between 0 to pi. Now last is cosec inverse x. इसका रेंज होता है all real numbers except -1 to +1, and जो इसका रेंज है इट इज बिटवीन -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0 जहां पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है. तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल है जहां से हम इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालते हैं. ऑलराइट, प्लीज नोट इट डाउन. Please like it, subscribe it. Now some more properties. इसमें क्या होता है that sin inverse -x is equals to minus of sin inverse x. Okay. Tan inverse -x is equals to minus tan inverse x. All right. Cosec inverse minus x is equals to negative of cosec inverse x. Now cos inverse -x is equals to pi minus cos inverse x. Please note it down. Sec inverse -x is equals to pi minus sec inverse -x, and cot inverse -x is equals to pi minus cot inverse x. So this is positive. ओके. तो ये नेगेटिव एंगल के लिए जो हमारे इनवर्स फंक्शन हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. मूविंग फॉरवर्ड. Some more properties. Our sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi/2. Okay. Tan inverse x plus cot inverse x is also pi/2. Sec inverse x plus cosec inverse x is also pi/2. All right. And sin inverse 1/x
is equals to cosec inverse x. Okay, tan inverse 1 by x is equals to cot inverse x. Okay, and sec inverse 1 upon x is equals to cosec inverse x. Please note it down. Now the properties of tan. First property of tan inverse: 2 tan inverse x can be written as tan inverse 2x upon 1 minus x square. Alright, 2 tan inverse x can be written as sin inverse 2x upon 1 plus x square. Alright, 2 tan inverse x can be written as cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Please note it down. Now, some important formulas. Sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. All right, tan 3 theta is equals to 3 tan square theta minus tan cube theta upon 1 minus tan 3 square theta. Okay, our tan theta is equals to tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Please note it down. Very main formulas. So it's clear that the range of sine inverse x is negative pi upon 2 to pi upon 2. Okay, so the question will come as, if y is equal to sine inverse 1 upon 2, then what is y? Or find the principal value. Find the principal value of y is equals to sine inverse 1 upon 2. कैसे होगा? It is y is equal to sine inverse 1 upon 2. इसको यहाँ भेज देंगे. So this becomes sin y is equals to 1 upon 2. Alright, now sin किस एंगल पे हाफ होता है? 30 डिग्री पे. So this becomes sin y is equals to sin pi upon 6. On simplifying it, we get y is equals to pi upon 6. Now, क्या ये रेंज में है साइन के? Yes, absolutely. The range of sine is from negative pi upon 2 to positive pi upon 2. So y will
एक्सेप्ट द वैल्यू पाई अपॉन 6 क्योंकि ये इसके रेंज में आ रहा है. ऑलराइट, प्लीज नोट इट डाउन. Now question is find the principal value for sine inverse negative 1 upon root 2. We know that sine inverse minus x is equals to minus sine inverse x. All right, so this becomes sine y is equals to minus 1 upon root 2. So this becomes sine y is equals to minus of sine 1 upon root 2. Okay, now sine becomes 1 upon root 2 at 45 degrees, so this becomes minus of sine pi upon 4. On simplifying it, we get y is equals to minus pi upon 4 as the range of sine inverse x, as the range of sine inverse x, यहाँ पे our y was minus pi upon 4. Now this is the value as the range of sine is between minus pi upon 2 to pi upon 2. Okay, please note it down. So question is y is equals to cos inverse minus 1 upon 2 and I have to find the principal value. Now we know that cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x, and the range of cos inverse x is from 0 to pi. So this equation becomes y is equals to pi minus cos inverse 1 upon 2. Okay, now the cos gives half value at 60 degrees, so this becomes cos inverse cos pi upon 3. So this is cancelled out, so the y becomes y is equals to pi minus pi upon 3. So the value of y is 2 pi upon 3, and this is in the range of cos, so the principal value is y is equals to 2 pi upon 3. इसका रेंज लिख देंगे from 0 to pi. Okay, please note it down. Now question is find the principal value of cos inverse minus 1 upon root 2 minus sec inverse minus 1 upon 2. Find the principal value of cos inverse minus 1 upon root 2 minus sec inverse minus 1 upon 2. तो यहाँ नेगेटिव एंगल है, सो दिस बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 upon root 2. Okay, minus this was negative, so this is pi minus sec inverse 1 upon 2. Okay, now let's take the angle as
2. This is 2. Alright. Now this becomes, now cos is 1 upon root 2 at 45 degrees. So this becomes cos inverse cos pi upon 4 minus pi minus sec inverse. Now sec is 2 at 60 degrees. So this becomes sec pi upon 3. So this is cancelled out. We get pi minus pi upon 4 bracket pi minus pi upon 3. So this is equals to pi minus pi upon 4 minus pi plus pi upon 3. Okay, so we got pi minus pi upon 4 minus pi plus pi upon 3. So this pi is cancelled out and we are left with pi upon 3 minus pi upon 4. Now LCM is 12. So this becomes 4 pi minus 3 pi, which is pi upon 12. You note it down. Now, question comes, prove 3 cos inverse x is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. ये हमको प्रूफ करना है. Okay. Now I can see by the dimension that ये जो फॉर्मूला है 4x cube minus 3x ये cos theta का होता है. So I will take let x is equals to cos theta. So I get 3 cos inverse cos theta is equals to cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So this is cancelled out and we get 3 theta is equals to cos inverse cos 3 theta. This is cancelled out, hence 3 theta is equals to 3 theta, hence proved. Okay, I hope this was clear to you. In the next video, we'll do all the questions of NCERT. Okay, please like and subscribe. Thank you so much.